her skin is very dry, so we are going to clean her skin. और cleansing के लिए हम use करेंगे Charlotte Tilbury का cleansing balm. It is one of my favorite products because अगर dry skin है तो ये इतना अच्छा hydrate करता है. Just by cleaning the skin, your skin feels so hydrated. So I'm going to clean her skin using this, and a little amount of this goes a long way. अच्छी तरह उसको face पर emulsify करेंगे. और मेकअप शुरू करने से पहले एक क्लीन कैनवस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका मेकअप कभी भी फ्लॉलेस नहीं लगेगा. These are such amazing sponge. You can get them from Amazon. Itne amazing. Do you feel it soft? They are so soft, just like a baby bum. And you know, the way it glides on skin, it's so nice. I ordered a whole bunch of this, and you can use it on your client and then dispose them off. They are so nice and very hygienic too. The next step for prepping the skin for dry skin is this glow toner from Charlotte Tilbury. Beautiful product, and it hydrates the skin very well. जैसे ही नायका पे सेल लगे, do grab these products. These products are mind-blowing. They're very good and they can change your makeup game. Lips को hydrate करना नहीं भूलेंगे. It's very important. You know, at times हमारे lips इतने dry होते हैं. The moment we put a lipper, and especially non-transfer lipper, वो और ज़्यादा dry कर देता है, and it doesn't look good. Even in cameras, और आपकी ब्राइड की पिक्चर्स, वीडियोस अच्छी नहीं लगेंगी. And who doesn't want soft, luscious, अच्छे से lips? कौन नहीं चाहता? Anybody. बड़े सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आईज के ऊपर आई प्राइमर ही देना ज़रूरी है, या हम कोई भी कंसीलर या कुछ भी ऐसा जो हम अंडर आइज में यूज़ कर सकते हैं वो भी दे सकते हैं. सो आई थिंक आप यू कैन यूज़ अ कंसीलर ऑल्सो. आई हैव बीन यूजिंग टार्ट. आई लाइक दिस प्रोडक्ट. इट ड्राइज आउट क्विकली. बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती इस प्रोडक्ट में. द ओनली पर्पज़ टू अप्लाई दिस इज़ हमारे आई का स्किन इज़ very thin. अगर देखें हम जैसे ही अपनी आईज बंद करते हैं ना, we can see lot of veins, and the only thing we want is कि वो veins visible ना हो ताकि हमारा मेकअप बहुत अच्छे से दिखे. इसलिए we use a nice eye primer or probably any concealer that you like. अलग से आई प्राइमर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इनिशियली हमने भी बहुत इन्वेस्ट किया है, but you can save your money on this and you can use a concealer. We're going to work with this palette. This is a Patrickta palette and it's a beautiful palette. Very nice. I love the colors. It's so nice. आपने देखा होगा ये पेंसिल कितने अच्छे तरीके से ग्लाइड की. दिस पेंसिल इज़ फ्रॉम Forever 52. आई डोंट नो द कलर. मुझे पता है सबको कलर जानना है, पर मुझे इसमें कलर कितना कुछ ऑलरेडी प्रिंटेड है. कलर बट इट्स अ नाइस ब्राउन. आई थिंक आप Forever 52 की साइट पे जाएंगे, यू कैन सी दिस पेंसिल एंड इट ब्लेंड्स लाइक बटर.
इतनी अमेजिंग पेंसिल है। अगर लैश लाइन के पास डेप्थ क्रिएट करना है देन दिस पेंसिल इज फैबुलस, इट्स सो गुड। देखो कितना अच्छा डेप्थ क्रिएट करता है। आजकल के मेकअप प्रोडक्ट्स दे आर सो गुड, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। बहुत ही सुंदर, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल ग्लिटर। अब आप पूछेंगे ये कौन सा है, इससे पहले आप पूछें, आई विल टेल यू दिस इज फ्रॉम बॉबी ब्राउन एंड द कलर इज सन फ्लेयर। कैन यू सी कितना खूबसूरत, एंड इसमें बड़े छोटे छोटे स्पेक्स हैं ग्लिटर के, लुक सो प्रिटी। अगर आपकी ब्राइड कोई हैवी चंकी ग्लिटर नहीं चाहती है then this is so beautiful and I think every makeup artist should invest into it. थोड़ा सा expensive है because it's Bobbi Brown but the effect is so beautiful और इतना खूबसूरत ग्लिटर है। आई थिंक स्पेशली जब आपकी ब्राइड के पास गोल्ड है, उसके आउटफिट में गोल्ड है, उसकी ज्वेलरी में गोल्ड है, मॉर्निंग ब्राइड हो इवनिंग ब्राइड हो, दिस इज अ ब्यूटिफुल कलर।
Let's start with the foundation. Foundation के लिए I like this brush from Sephora. This brush is number 47. Although हमारे पास foundation के लिए बहुत सारे brushes हैं, we do have, this is also one of the brush and this is from Makeup Forever. You do get other brushes like this. अगर आप इस brush से application करते हैं, then the application comes out to be a little heavy. अगर आपको ज़्यादा coverage चाहिए, then I would recommend कि आप ऐसा brush use करो. There is another brush which is like this. This is called as a Real Techniques Expert brush. Although हम इसे buffing brush भी कहते हैं. If you have open pores on your skin and you don't want very heavy coverage, then this is one of the brush जिसे आप foundation apply करके साथ में blend भी कर सकते हो. This is also one of the brush that I'm using right now and I've already told you कि ये Sephora का brush है and this is my personal favorite right now. Although हमारे favorites change होते रहते हैं but इस brush से application बहुत smooth, बहुत अच्छी आती है and I think if you want to deposit the product, आप heavy coverage देना चाहो, light coverage देना चाहो, you can customize it accordingly. And then on top of it, beauty blender से इसको अच्छी तरह blend कर देते हैं. So it turns out to be really nice. Now it is your call. आप कौन सा brush use करना चाहते हो, कैसी coverage चाहिए client पर, या फिर आपका हाथ किस पर set है. I think that's also very important. That you know, every makeup artist has a personal favorite, so you can decide about your personal favorite. That this is your kind of brush.